Afternoon, everyone. Asta Manisha Rohitan. There was the one Surbhi. आज मकर संक्रांति है. हाँ. No, Asta saying no. चलो, what we are doing? पूजा आपने क्लासेस ली पुरानी वाली? अब क्यों घर गए थे? प्रिपरेशन इतने सर पे और अब घर जा रहे हो? किस फाइनल एमएससी का? इन्वायरमेंटल साइंस वाला, यूजीसी वाला. हाउ वाज द पेपर? ठीक था इस बार तो. बहुत फैक्चुअल नहीं पूछा था उन्होंने. आई हैव सीन दैट पेपर. एनालिसिस करते हैं ना इस पे. तो पेपर तो ठीक था. हाँ, फैक्चुअल चीजें इसमें होती है तो हम उससे रिवाइज नहीं कर पाते. बीओडी सीओडी पे भी क्वेश्चन था एक शायद. नेगेटिव नहीं होता. नहीं नहीं ठीक है, दे देना चाहिए. लास्ट ईयर वाली तो वैकेंसी कैंसिल हो गई. यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर वाली. One of my friends has given that examination. So. अब नहीं जाना है घर. 26 का पेपर दे रहे हो ना? अब नहीं जाना है घर. ठीक है, होली पे भी अवॉइड कर सकते हो तो कर लो. बिकॉज होली पे जाते हैं तो फिर वो पूरा एक तो जाने का माइंडसेट अलग होता है, फिर आने के बाद वो माइंडसेट अलग होता है इसका. राजकुमार टाइम से आया करो ना. अच्छा लेट जाते हो आप. बट ठीक है, वी हैवंट स्टार्टेड येट. गुड आफ्टरनून गाइस. चलो. So we have talked about that external and internal metamerism, है ना? चलो make it heading. So we were talking about that Aisha. So we have completed. आपको क्लासेस का एक्सेस मिल गया? पुरानी वाली क्लासेस का. दो मंडे ट्यूसडे का आप एक बार देख लेना. So we have completed the CLOM. Although I have tried to complete the CLOM also. एक ना zoology optional करके जैसे कि जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जनरली आई डू, जो हम लोग पीडीएफ में दे रहे हैं ना, जैसे कि हमने आई विजन वाला जो है पूरा पीडीएफ में दिया है, तो उसको मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट देयर. तो एक जियोलॉजी ऑप्शनल करके यूट्यूब पे चैनल है. स्पेसिफिकली बहुत लिमिटेड रखे हैं मैंने उसमें, तो उसमें सिर्फ जियोलॉजी के ही वो पढ़े होंगे. अगर होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करा दूंगी. सो कुछ जैसे सीलोम का टॉपिक है, इफ यू हैव एनी डाउट, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट नॉट इन दैट एक्सप्लेनेटरी वे, बट आई हैव ट्राइड. तो आप चाहो तो देख सकते हो. अभी शायद आज ही किया तो अभी अपलोड नहीं होगा, बट इट विल सून अपलोड है. ठीक है, तो देख लेना एक बार उसको. इसी का है बट इन लोग ने इंडिविजुअली अलग से मेरे लिए बना रखा है. ठीक है, सो दैट सिर्फ जियोलॉजी वाले बच्चे उसको देख सकते. यस. So we have completed the coelom with the concept of the protostome and deuterostome. वो डायग्राम देखा है सबने? I'll revise a little bit because there's some new student guys, so you guys can also revise like that. Okay, so this is something. राजकुमार, ये क्या है? ब्लास्ट टू पोर से क्या बन रहा है सबसे पहले इसमें? तो ये आपका क्या हो गया? स्प्लिटिंग. ये बन रहा है. ठीक है, so this is I tried to explain something. देखो, if you guys can able to see, so there's a we have talked about. देखो majorly आपका जो when we differentiate the coelom के basis पे animals, so there are mainly three: ocoelomate, cerocoelomate and eucoelomate or the true coelomate. ठीक है, ocoelomate of course है solid body mass, है ना, इसमें differentiation नहीं है. Then second one is cerocoelomate in your platyhelminthes, है ना, start developing of the tryptoblastic layer from there only. And then we talk about the eucoelomate. Then eucoelomate further divided into schizocoelomate and enterocoelomate. So what is the basic differentiation? If I'll just concise everything, तो बेसिक क्या होता है? जैसे कि ये वाला डायग्राम है. बेसिक क्या होता है? जैसे कि आपका जाइगोट है. सो जाइगोट में आपका इफ द सीलोम इज डेवलपिंग फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, so what is happening? This is your ectoderm, this is your endoderm, and this is your mesoderm. So when coelom is developing by the splitting of the mesoderm, देखो ये इसमें ये लाइन दिख रही है. This is small one. देखो, now you can see, ये देखो दिख रहा है mesocoelom, mesoderm दिख रहा है. So this is something the mesoderm, and coelom is forming by the splitting of that mesoderm.
So that is your cystocoelom, ठीक है, which is found in the Annelida, Arthropoda and Mollusca. So that is why they are not directly connected with that chordata or the proterocoelom they are called. But if we talk about that enterocoelom, that is exactly true coelom, then we are forming that archenteron cavity, and that is, देखो यहाँ पे जो mesoderm है और यहाँ पे जो mesoderm है, here which is a mesoderm, which is completely different. और इसमें अगर इसमें बेटर अगर देख पाओगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये mesoderm है completely और ये बीच में हम क्या देख रहे हैं, what we can see there is a rupture. So that is your cystocoelom exactly. And here what is happening, that archenteron cavity is like that is invaginating and folding into some kind of, और ये जब folding deep हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, that is your, ये white वाला portion है ना ये, that is your coelom. ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट करा है. मेटामर्स वी हैव कनेक्टेड इट, सो वी हैव कंप्लीटेड इन दैट मेटामर्स. We have completed the metamer is your कौन वाला कर लिया, external और internal कर लिया है, ठीक है. Now we are going to talk about, make the heading complete and incomplete metamerism. Complete and incomplete metamerism. That down, the metamers are essentially like, the metamers are essentially alike homonomous comma, each having the segmented blood vessels, each having the segmented blood vessels, comma, nerves, nephridia and coelomoducts, nerves, nephridia and coelomoducts. Full stop. This condition is called homonomous metamerism. This condition is called homonomous metamerism, which is also known as complete metamerism. Which is also known as complete metamerism. Next point. In the complete metamerism, or in this type of metamerism, there is a repetition of segmentation. There is a repetition of segmentation, which is directly associated with repetition of almost all the muscle system, repetition of almost all the systems, such as muscles, nerves, blood vessels, such as muscles, nerves, blood vessels. आयशा फास्ट है तो बता देना, आई विल रिपीट इट. फास्ट है, बोलना है आयशा, ठीक है. पूजा से आप पूछो अगर ऐसा कुछ भी है तो क्लास में प्रॉपर बात बोल सकते हो. आई विल डू दैट. सच एज मसल्स, इसीलिए अपनी दूसरी नोट्स ओपन करिए. नो, डू दैट इन द मेन कॉपी ना. स्पीड तो वही रखना है. आई विल रिपीट इट एंड आई विल मेक इट. Oh, okay, ठीक है. As you are comfortable, fine. Muscles, nerves, blood vessels, excretory organs, in all the segments, which are generally similar in structure and function, Example, annelids. Such as earthworm and nereis.
annelids such as earthworms and nereis. This year the question come about the linkage. So linkage का जो question आया था वो directly that division they have asked. They have not asked what is linkage and what is type. They have directly asked about the linkage. So there is a chances. So it is a very specific kind of question. So in such type of question you start with like definition or something like that. So it can be अगर linkage पे question आ सकता है which is not even very different for the in the type of the linkage. So incomplete or complete या external or internal ऐसे करके भी metabolism पे question आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टडी राउंड इस तरह से चेंज करके इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. It is generally found. It is generally found in the higher animals. In the higher animals, such as orthopods, such as orthopods and chordates slash vertebrates. Orthopods such as chordates slash vertebrates. This type of metamerism shows. This type of metamerism shows the division of labor. Shows the division of labor in the form of different segments slash metamers of the body which is directly associated with coelomic development. Full stop. The segment slash metamers are greatly dissimilar in different regions of the body as even the segmentation is not present. Even the specific segmentation, please add it. Even the specific segmentation is not present in all the organs. Full stop. Next, segments of the body fuse with each other in a specific manner to form fewer few like less segments होते हैं incomplete में fewer more complex body region such as in orthopods the animal body is divided mainly the animal slash या organism जो भी लिखना है the animal or organism body is divided mainly into three segments slash regions having specific functions such as
कौन कौन से 3 रीजन होते हैं पूजा? यस, सच एज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना. यही फर्दर आपका सारी वर्टिब्रेट में भी यही फॉलो होता है. जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दैट ह्यूमन आल्सो, यस, आस्था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. Okay, I should have been read that. Okay, such as if when we talk about the human physiology, right? So human physiology, when we always talk that head region, then the thorax region, which is containing the ribs, you know, and having the lungs and the heart region. Then the abdomen region. Abdomen region is mainly constituting with that digestive system and the excretory system, है ना. Leg वाले portion को in that last class we have already talked about. Why do not we divide the leg portion into that specific segment? Because actually the human, specifically we talk if, so they were the group of the tetrapoda. So just ये position it become tilted, है ना, it becomes straight and upside, not tilted. So this is your region, that head, this is the region of thorax, and this is the region of abdomen. Abdomen region, as we go further in the, when we talk specifically about the phylum, so abdomen region in that further greater development of phylum, if you see that क्या कहते हैं, orthopoda, ठीक है, ऑर्थोपोडा, देन मोलस्का एंड एवरीथिंग. मोलस्का की बॉडी का थोड़ा सा अलग कॉम्प्लेक्स है बिकॉज वी फाउंड दैट इन दैट टॉर्जन एंड डीटॉर्जन, बट मेजरली योर दिस पोर्शन thorax region is related with the circulatory system if we talk about a specific system, and this abdomen region, that's why somewhere you must have seen that abdominal pain हो रहा है ना. abdominal pain is something related with that stomach region, है ना. and also the reproductive part. If you have ever dissected the cockroach, so उसमें मतलब cockroach के dissection में actually यही कराते हैं to find the testes and the in that cockroach body, है ना. that's how that sexual dimorphism you can see in that cockroaches में sexual dimorphism कैसे होता है, last anal segment में इसमें division होता है. so they show the sexual dimorphism but not ऐसे करके, but उन लोग में sexual dimorphism show होता है. so that means अगर suppose यही question आपको specifically 15 marks में है, तो 10 marks में आया तो you can write very limited portion की, ठीक है, what is this kind of thing. If this is question only comes into, तो आप इसी चीज का क्या करोगे, what you will do, specification कर दोगे. That thorax region is mainly associated with that circulatory and all, but the abdomen head region is mainly constituting what is a major what is a major 2 portion in, even we talk about the periphery, है ना. We have asked this question in the last class, that neuron or the nervous system, because consciousness, when you have started in 10th or 11th में bio, तो उसमें से पहला chapter, the first chapter is that, okay, so the first chapter is that what is the basic difference between that living and non-living. So consciousness is one of that word which is found in all the living organisms, है ना, irrespective of anything. So consciousness is coming from that neuron system. So can we say that for that any organism to being an animal, the neuron system is required, and for that survival the digestive system is required, ठीक है. and if there is a neuron and the digestive system, of course it must to circulate in the body, that's why it is required the circulatory system or the fluid based system, that is also in that water canal system in that porifera. if you got the basic concept ना, everything you can relate like that, ठीक है. अब अगर देखो, अब जनरली वी गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से लेयर से क्या डेवलप होता है. यहाँ पे बेसिक 3 चीजें हैं. सो न्यूरॉन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद दैट एक्टोडर्म, डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंडोडर्म से रिलेट क्या कर रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और द गट सिस्टम, राइट. सर्कुलेटरी सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप. In that periphery, the circulatory system doesn't develop. So the circulation occurs normally through your water canal system. While when we talk about that in that human, what is the circulatory system? Your heart, mainly your heart and blood vessels, right? So human has a development of that mesodermal layer, or we can say that diploblastic gradually develop, है ना. Initial जो organism है आपकी, वो आपकी कैसे diploblastic. So can we say that heart is your mesodermal in origin, है ना. easy to understand. Even if you do not remember anything when you are writing about the germ layers, at least every single point से, every single layer से अगर आप एक एक organ भी mention करते हो, so it will be a kind of justification of it. easy है ना understand करने के लिए. ये point यहाँ पे नहीं भूलेंगे, ठीक है. basic जो animals है, the basic animals have the things of the neuron. देखो neuron जो system है, that is developing starting from that hydrocele and treta,
but neurons is specifically the type of cell which is found in the porifera, they function as a neuron system. ठीक है? इनकम्प्लीट हो गया, एग्जाम्पल लिख लो. ऑर्थोपोड्स लिख लिया ना, एग्जाम्पल ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट्स स्टार्टिंग में शायद लिखा है. ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट स्टार बना के एट द पॉइंट. इन ऑर्थोपोड एंड वर्टिब्रेट्स, in orthopods and vertebrates, metamerism is more complete. Metamerism is more complete, and metameres are uniform. And metameres are uniform and clear in larval and embryonic stages. In larval or embryonic stages, but metamerism become obscure. But metamerism become obscure in the adult. In the adult, due to subsequent specialization or modification. Due to subsequent specialization or modification. Which law, Pooja? This is an example of which law? This is in your syllabus also. Although this is not mentioned in syllabus, but again, guys, the complete zoology or the biology subject is related, है ना? So have you heard about that? What we have just written? We have simply written कि आपके जो orthopods and other organism है, in their larval development and during that embryonic development, in the larval or the embryonic development, they also consist which type of metamerism? The complete metamerism, है ना? That we have written. But generally, when we have written the complete metamerism, it started from the point of the annelida. That means we can say that complete metamerism is one of the example for that lower invertebrate compared to the orthopoda. Annelida is a lower one, right? When we talk about that protozoa, porifera, coelentita, ctenophora, and fatty. आज मैं सोच रही थी, ठीक है? So when we talk about that Platyhelminthes, SK helminthes, Annelida, and then Orthopoda. Okay, so compared to Orthopoda, this is your Annelida is a lower one. So can we say that during when we talk about that evolutionary development, Annelida came first, then after the Orthopoda came later, है ना? Because up till here, the Porifera, the Coelenterata, the Ctenophora, Platyhelminthes and SK helminthes are completely of parasites, except one or two, है ना? So ये क्या है आपके? These are living in that aquatic habitat, है ना? And then we come into that. So annelids generally live in, such as if you talk about that earthworm, so they generally live in that moist areas. That means water is survival. But as we move from that annelida to orthopoda, they have developed properly skin system. That is the chitinous development also. Okay, so orthopoda is much more developed. But what is this statement is saying? That in during that larval or the embryonic development, the orthopoda and other vertebrates also had that complete metamerism. So there is a concept or there is a law which has been asked very frequently, that is your biogenetic law. Although this is actually explaining the concept of the vertebrates के लिए है, that is embryogeny recapsulates वाला biogenetic law सुना है everyone? हैकल ने दिया है जो, ठीक है? This statement proves this law. This law given the same statement that जो भी actually he has talked about that fish. He had talked about fish, then amphibians, then annelids, and then tetrapoda. ठीक है? What it says that कि fish, amphibian, annelids और tetrapoda का जो आपका embryonic development है, वो एक डायग्राम है ना, जिसका embryonic development में इसका chick, इसका larva, everyone is looking the same, है ना?
That's how you're also justifying with that statement that biogenetic law is exactly accurate law. Later stages में ही नहीं, आपके invertebrate stage में भी the larval development of all the organism is same. That's why we can say that evolution of the animal is actually started from that porifera or the single cell organism. When we talk about that RH Whittaker system, that देखो, एक होता है कि आप bookish language लिख रहे हो, एक होता है कि when you are writing such kind of answer you are justifying accordingly. अब आप इसको कहाँ बॉडी में नहीं लिखोगे, बट यू आर जस्टिफाइंग. अगर सपोज दैट या फिर सपोज दैट द क्वेश्चन इज डायरेक्टली द बायोजेनेटिक लॉ, एक तो उसके सीधे सीधे 3 लॉ ऑफ ट्रंकेशन एंड ऑल 3 लॉज है, एक आप उसका कंक्लूजन जस्टिफाई करके लिखोगे. इवन इन दैट मेटामेरिज्म कांसेप्ट द ऑर्थोपोडा और अदर वर्टिब्रेट आल्सो हैज दैट लावर डेवलपमेंट कंप्लीट. अग्री? समझ आ गया? Now write it down. Origin of theories of metamerism. 2 theories लिखते हैं क्यों? नहीं है बहुत सारे. Theories of metamerism. First, pseudo-metamerism theory. First, pseudo-metamerism theory. So this is name indicating that this is a pseudo-metamerism. ठीक है? Pseudo means false. Partial नहीं होता, false होता है सीधे सीधे पूरे. Pseudo-coelom में false coelom है ना? So that means ये theory जो है that is saying कि जो भी आपका metamerism है that is just external. That is not even proper developing. But actually when we talk about the core concept of the metamerism, this is actually relating with that coelom. देखो how this metamerism is relating with the coelom. If we talk about अगर evolution in that during of the evolution अगर coelom develop नहीं हुआ, coelom is a body cavity which is giving the space to development of organ which are your visceral organ which are important or necessary. तो अगर आपके ह्यूमन बॉडी में if there is not the coelom, then how will you decide this segment? है ना? Coelom is providing thoracic segment, abdominal segment, head segment. This is the coelom. This is the body cavity where the important organs are located. है ना? यही तो है आपका metamerism. But there's a development, उसको एक नाम दे दिया गया है. So that is why when we started talking about the coelom, the germ layer and the metamerism and the symmetry also. These all are the interconnected. ठीक है? I don't zero metamerism. This theory states that metamerism developed secondarily. This theory states that metamerism developed secondarily simply as a result of repetition of body parts, simply as a result of repetition of body parts, such as muscles, nerves, nephridia, coelom, muscles, nerves, nephridia, coelom, blood vessels, etc. etc. Okay, what is the basic difference between that complete and incomplete metamerism? Complete means such as your annelida. So whatever the segments you are seeing outerwards, है ना? How many segments are there in the earthworm? कितने होते हैं? 72. किस हिसाब से भाई? Anyone online? How many segments found in that earthworm approx on an average? पिटाई होगी राजकुमार. 3 segments. 14, 15, 16 पे तो आपका क्लाइटेलम ही हो रहा है. 3 कहां से हो रहे हैं? 17, 16, 17, 18, 19 पे आपका स्पर्मेथिका है ना? 3 कहां से हुए? The complete metamerism we are talking about now. कितने होते हैं anyone? Seriously? पूजा? 100 to 120 almost. 80 to 100 तो almost होता ही है सब में. 100 मैम. Yeah, exactly. 100 to 120 जनरली आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज है. ठीक है? So that means what it is saying, the complete metamerism is talking about the segments you are seeing externally. ठीक है? That segment is actually divided. Annelids में किस टाइप का coelom है? राजकुमार, which type of coelom found in the annelids? Coelom.
Astha, which type of coelom found in that annelids? Good. In that, the type of Rohit, which type of coelom? अभी जस्ट समझाया है. अगर क्लास में आप लोग थोड़ा भी कॉन्शियसली बैठोगे ना, which is requirement. समझाया यार. इसका एग्जांपल दिया था. दिस इज योर. हाँ, इसका एग्जांपल है आपका. दिस इज योर साइजोफिलोम. साइजोफिलोम का एग्जांपल है आम, एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का. ठीक है, दैट इज योर एग्जांपल ऑफ साइजोफिलोम. तो एनालिड में आपकी कौन सी है? ट्रूसिलोम. एग्जैक्टली दैट, साइजोफिलोम. एंड ऑर्थोपोड्स में एंड सॉरी एंड इन दैट ड्यूटेरो एंटेरोसिलोम में, है ना. यहाँ पे हमने फर्दर डिवीजन करा तो था, अच्छा हमने हटा दिया, वो लिखा था हमने. Enterocoelom में there is a echinodermata. That's how you are connecting the concept of chordate origin theory. पूजा, annelid से फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका एनालिडा है. एनालिड से आप ऑर्डिट उसको कैसे कनेक्ट करो? द स्टार्ट ऑफ द सीलोम. ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसके बाद तो कंटिन्यू कहीं पैसा तो है नहीं कि as you go further you'll have the tetrablastic. It's not like that ना. Even human also has the tetrablast first. तो फर्स्ट ऑरिजिन आपका द फाउंडेशन, द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सीलोम फाउंड इन दैट एरिया, annelida. So connect the annelida with the chordata. The second thing is the echinodermata. echinodermata से connect करते हैं chordate origin की theory. Concept आपके syllabus में है. Again I will repeat it when we talk about the chordate, but connect the points now. That's how we are explaining the concept. So what is the complete metamerism? So that means whatever the segments 100 to 120 you are seeing outside that, each segment, in that each segment everything is repeated. जैसा such as nephridia is repeated, है ना. pseudopodia is repeated, right? That means जो आपका जितना segment outer है उतने ही segments inner भी है. Incomplete segment, incomplete metamerism is that आपका external segment जो दिख रहा है, जैसे कि if we talk about nephridia, nephridia is present almost a protostome और नीचे वाले स्टोम को छोड़ दो तो nephridia, that is the internal excretory structure that is present almost every segment. What can we say about this us? That our excretory organ is present in the head also, the thorax also, the abdomen also? No. Why it is not present? Because we have the specialization. We have this kind of, but in that larval development. As we gradually develop according to the changing in evolutionary condition, इसकी nephridia में, the nephridia of the earthworm or the nephridia of the human has a differences. उसकी nephridia very simple. हमारी nephridia much more complicated because of the specialization. ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का करेक्ट हो रहा है? कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है जस्ट आस्क मी. चलो, pseudometamerism theory क्या लिखा है इसमें? repetition of body parts such as muscles, nerves, nephridia, coelom, blood vessels, etc. in the single individual. In single individual. It is generally seen in some elongated turbularian turbularians turbularians and nematens. निमेटोडा का ही है, टर्बुलेरिया निमेटोडा है ना, उसी फाइलम का है ना ये. निमरटेंस, TENES, निमरटेंस, full stop. Gradually the segmented condition obtained या formed with cross partitions in them, so that each segment received a repeated part of each system
of each system. देखो ठीक है. तो pseudocoelom theory क्या कहती है? So we know that SK helminthes or the platyhelminthes, we know that both are the parasites. Generally, there's a very slight differences only. So what we know that in that platyhelminthes there's an organism known as flatworms, है ना? जिसकी body there is also segment. This is also segment. ठीक है. तो pseudocoelom is theory, but here which kind of coelom? Guys, please answer me for that. In that platyhelminthes, which kind of coelom? Coelom. That's not even the font proper coelom. But in your SK helminthes, there is a pseudocoelom. Okay. What is the pseudocoelom? What is the pseudo metamerism theory says that कि इसमें भी there is a segment, है ना? That is known as gravid or the mature proglottid. During that infection, it one by one this segment removes, है ना? For the better survival. That is a kind of parasitic adaptation, है ना? This is one of the concept. So इसमें भी आपके segment है. So that is when we talk about that metamerism. When we talk about the true or the false metamerism, this is your example of false metamerism. Because this type of metamerism is simple, the segmentation of the body. This type of metamerism, which is found in the platyhelminthes, is not related with the coelom. So when such kind of questions comes about the metamers or the coelom, connect the metamer concept. Annelid से आपका true metamerism है, guys, है ना? Annelid से आपका true metamerism भी है और annelid से आपका true coelom भी है. अभी connect हुआ? So what is the pseudo metamerism? It says that actually the metamerism is originating from here. जो कि आपका actually metamerism है भी नहीं. It is just the kind of adaptation in the platyhelminthes. That's it. So pseudo metamerism says that actually metamerism arises from here, but gradually with the development of this are going to the external segment, which is not even the true metamerism, just crossed each other, the cross striation, and this is further is going to form that metamer. So if I'll ask to you guys that this theory is correct or not, what will you say? Is this correct? That this is theory saying that metamerism actually originated in the platyhelminthes or skelminthes. So it is saying earlier ये वाला division था और फिर both the cross striation हुआ externally ही और that is forming the metamer. Is that correct? No, not at all. Why? Because core में we know that the coelom and the metamer concept are related with each other. If the metamers are connected with this theory, but the coelom is not, right? So this theory is completely false, but this has given that theory, है ना? यहाँ पे you get the division of that true and the false metamerism, because such kind of metamerism which is, देखो अगर suppose that we are also the metamerist, है ना? अगर हमारा abdomen निकाल दें, so can we survive? Abdomen is also one of the segment, na? In that metamerism, abdomen is also one of the segment. So if we remove that abdomen or the head region or the thorax region, this is the main three segment in that higher vertebrates, can we survive? But what is happening in this? If this is doing itself, removing जैसे जैसे और इसके each इसको बोलते हैं proglottid. Each segment को this is called the proglottid. This is not even calling the metamerism. ठीक है? So in that each segment there is a proper gonads, है ना?
So क्या होता है, when it become large, when it becomes survival for a really long, this is a kind of stool test होता है. अगर infection होता है, food poisoning होती है, तो stool test करते हैं human का. So stool test में ये segments निकलते हैं. So this is a kind of adaptation to survive. So what is I'm trying to correct it here? इसके जब segments निकाल दे रहे हैं, still this is surviving. So that means this is not the true metamers, because the true metamers is important for that animal body or the survive or to live. That's it. समझ आया? प्लेटफॉर्म उसके बाद फिर बताया कि जो साइंटिस्ट थे वो हाइफन वो बता रहे थे कि जो क्रॉस स्टेशन हो, एक्सप्लेन करना है. अच्छा, क्रॉस स्टेशन मतलब इन्होंने ये बोला कि अर्लियर, बिकॉज यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट दैट मैच्योर और द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, हम लोग करेंगे प्लेटिहेलमिन्थेस में ये वाला कॉन्सेप्ट. सो दे व्हाट ही सेड कि इसमें कुछ तो स्पेसिफिकेशन हुआ. सो ये वाली सेगमेंट इससे क्रॉस हो गई, ये वाली सेगमेंट इट क्रॉस्ड हियर, ये वाली सेगमेंट इट क्रॉस्ड हियर, एंड दैट्स हाउ द कंप्लीट मेटामेरिज्म. एक्चुअली थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ, फ्यूज मतलब इसका मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली दे बिकम क्रॉस्ड टू ईच अदर. जैसे कि अगर क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये दैट मीन व्हाटएवर दिस साइड इट इज फ्यूजिंग विद दिस साइड, दैट इज आल्सो द क्रॉसिंग ओवर. यही तो है द exchange of the material between the two non-homologous sister chromatids, है ना. So he suggested that there's a cross striations occur between the segments, and that is forming he didn't even talk about the coelom. So that's why this theory was not accepted. ठीक है, समझ आ गया. But this theory was only relevant for that non or the false metamers animals, क्योंकि उसमें बात सच है. Alright? Any doubt? Anyone? कोई डाउट आयशा? पक्का? चलो लिखो. This theory was supported by Hyman and Goodrich. Hyman and Goodrich. 1951 Hyman, but year लिखने का जरूरत नहीं. Second, cyclomerism theory. Second, cyclomerism theory. Proposed by Sedgwick. And supported by ऐसे लिख लो, and Riemann. It is connected with the enterocoelous theory. With the origin of mesoderm and coelom. For the origin of mesoderm and coelom. Yes. This is supported by Sedgwick and Riemann, है ना. This theory is connected with that enterocoelous theory, Rajkumar, where we have covered that enterocoelous theory. This is covered with enterocoelous theory of the origin of mesoderm and coelom. कहाँ पढ़ा था enterocoelous theory? सीलोम में पढ़ा था, साइलोसीलम एंटेरोसीलोम में, गोनोसील, साइलोसील, एंटेरोसील, है ना. थ्योरीज पढ़ी थी हमने. देखो, देयर इज डू वन थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग आप लोग जाके ऑप्शनल घर पे पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे हम इतना एक्सप्लेन करते हैं that even if you will revise you will remember that, है ना. But if any class will going to miss, just try to cover that, because आपके कॉन्सेप्ट हैं जो वो रिवाइज वो रिलेट होते हैं पिछले वाले टॉपिक. ठीक है, अगर कोई क्लास मिस हो जाती है इट्स कंप्लीटली फाइन, बट जस्ट कवर दैट. नोट से भी बना रहे हो तो एक बार टच तो करके ही आओ उसको. ठीक है, चलो. दिस थ्योरी सेज दैट एंसिलोम देखो इसने सबको कनेक्ट कर दिया. जॉन ब्लेयर को भी कनेक्ट कर दिया मीजोडर्म से, और सीलोम को भी कनेक्ट कर दिया, है ना. फर्स्ट ऑफ दिस थ्योरी assumes that this says that coelom originated in some ancestral radiate coelenterate
radiate sealant rate through the separation of foregastric or enterocolic. मैंने क्लास ज्वाइन की तो ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं ये मेरे 2 महीने पहले तो नहीं होता मैंने पहले तो फिर अभी उसका ये चल रहा है ये साइकिल होती है साइकिल होता है ना पूरा तो मैं दूसरा ऑप्शन जैसा कि आप 2 दिन नहीं आए थे तो वैसे मैं एक स्टार्टिंग जो 1 डेढ़ 2 महीने का था ना उसमें मैंने अटेंड किया था मतलब लेट ज्वाइन अब पिछले बैच से हो अभी ये बैच में हम सिर्फ स्टार्टिंग कर पढ़ रहे हैं फिर वैसे कोर्स जो वैलिडिटी वो 1 साल तक का रहता है मैंने हाँ मतलब वही जो नहीं किया मैंने चार चार तो एक टाइप से रहेगा मैम बस पहला पेपर का है और सेकंड पेपर अभी नहीं रहेगा देंगे मेरे पास कुछ दिनों में एडमिशन लिया हुआ एडमिशन नहीं हो अब नेक्स्ट से हो गया हाँ ग्रेजुएशन हाँ आपका नहीं है अभी जैसे कर समझ से कर ये सीखिए
क्या करें अपन द साइक्लोमेरिज्म थ्योरी है ना sorry guys for this delay because they were the student of the optional only so I was just discussing with her this theory assumes that coelom's origin ये लिखा है क्या लिखा है लास्ट में पूछा separation of gastric, four gastric and enterocoelic pouches four gastric or enterocoelic pouches फोर गैस्ट्रिक यहीं पर है ना इसके पहले ही कुछ एंटेरोसिलिक पाउचेस POUCHES pouches from the central digestive cavity or gut full stop division of two pouches resulted into three pairs of coelomic activities three pairs of coelomic cavities division of two pouches resulted into three pairs of coelomic cavities the protocoel mesocoel and metacoel protonephridia mesonephridia and metanephridia वही वाला protocoel mesocoel and metacoel loss of protocoel and mesocoel led to unsegmented coelomates while subdivision of metacoel leads to segmented annelids ठीक है नेक्स्ट समझ आ गया इसमें what did they say the actual division this theory was more or less accepted because they have connected that metamerism with that germ layer and the coelom formation so what they said actually the coelom is divided into the type of cavity is divided into protocoelom procoelom mesocoelom and metacoelom so what is happening they are become fused and forming that unsegmented whatever the animals but the metacoel is further divided and forming the annelid and orthopodan so majorly आपका metacoel ही further divided what he did just do कि उन्होंने coelom को further divide कर दिया that's it only he did but he connected with that mesoderm and the coelom ठीक है next Korn or fission theory this was the most accepted one Korn or
हाँ, third one, fission theory. Korn or fission theory. According to this theory, the metameric segmentation resulted when some non-segmented ancestors divided by transverse fission repeatedly or by asexual budding producing a chain of sub individuals or zooids हाइड्रा में होते हैं ना, that the type of asexual reproduction है ना. When we talk about that hydra, we talk about that when we talk about the coelant traits, we talk about the two things. एक आपका होता है asexual reproduction with the help of the zooids. ये simple क्या हुआ, budding हुई. Suppose that this was the hydra body, यहाँ पे budding हुई and that is a complete segmentation form. So this is something he called. ठीक है. और फिर एक आपका होता है sexual reproduction with the help of that polyp and medusa. Yes. So he said actually what this theory Korn और देखो इसका नाम ही क्या है, fission theory. Fission is simple the division of something. Sirbi, you want to say something? You're typing something. Do you want to say something? Okay, fine. So what I was saying, suppose what is this theory as the name indicates? Suppose that this was your hydra, है ना? So what is happening? Hydra में there is a budding. So budding is getting gradual, enlarged, and this is they called the one other segment. Earlier there was a normal segment. यहाँ पे क्या हुआ, एक other segment. Just as a method of the asexual reproduction with the binary kind of या transverse kind of fission, there are more segments formed in that body. He also did not connect with the coelomorph, that's a germ theory. He simply talked about the asexual reproduction is forming the more segment. That's it. ठीक है? क्या लिखा है इसमें? Zooids, united end to end due to their incomplete separation. This theory greatly elaborated by Perrier. Next, embryological theory. It explains the metameric segmentation. Embryological theory. It explains the original metameric segmentation. Mainly as an embryological accident. Whose full stop. It suggests that आपको पता है कॉर्न और फिजन थ्योरी ना बहुत टाइम तक, इट वाज लाइक फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम दिस कॉर्न और फिजन थ्योरी एक्सेप्टेड थी, because ultimately when we talk about that, when we see that annelid or something, there is actually extension of the kind of asexual segmentation, but gradually because it was, अगर इसी को ये कहीं ना कहीं if he could have been connected with the kind of mesoderm, तो ये theory accepted भी हो जाती, for a really long period of time ये theory accepted.
ठीक है, but gradually it find out that metamers are actually connected with the coelom, not with that of sexual reproduction. Why this theory was why this theory was so much accepted in that early period of time? Because they actually talk about the reproduction. Reproduction is something is new there is, and that's why, although it is finally it's not accepted. It suggests that mechanical stresses. It suggests that mechanical stresses in the mesoderm, in the mesoderm of the elongated embryo slash larva, of the elongated embryo slash larva resulted in its fragmentation, leading to segmental repetition, of mesodermal derivatives, in adult. लास्ट में स्टार बना के थ्योरी लिखो. आरबी क्लार्क, ये अलग है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद दैट थ्योरी. आरबी क्लार्क suggested in 1964 that coelom evolved initially as a hydraulic skeleton, to facilitate locomotion, in response to increasing body size, and evolutionary condition, and changing in evolutionary condition, full stop. He said that metamerism also evolved as an adaptation to burrowing in annelids, sand, etc. Full stop. The evolution, burrowing in sand and anything. Full stop. The evolution of compartmented coelom, with the development of septa, slash metamers, localized the function of hydraulic skeleton. Compartmented coelom with the development of septa slash metamers, localized the function of hydraulic skeleton, which allowed
the specific locomotion as strong peristaltic locomotion in organism and further segmental organization for the nervous, circulatory and excretory system, and further segmental organization for nervous, circulatory and excretory system. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पेज को डिवाइड करो, पेज को फोल्ड करके जस्ट मेक हियर द ट्रू मेटामेरिज्म एंड स्यूडो और द फॉल्स मेटामेरिज्म. True metamerism. So I will give such kind of question where simply write down where the simple question will be the types of metamerism. So in such question either I am giving that or the UPSC exam paper the question is given like that. So you will define the metamerism properly, okay? And then depending on the course the number of the how many words or the number of question, then when you start writing about that types, write all the types. ऐसा नहीं कि एक ही types लिख दिया, ठीक है? आपको क्या लिखना है? Complete, incomplete, external and internal and true and false. सारे ही लिखने हैं. अगर आपका the question is a 10 marker, then still even mention all these three. Mention आपको that's what it is showing. The examiner will get to know that you have the information of all the three types. उसको define आप बहुत precisely कर लो. Example दे दो और define कर दो. That's it. But that अगर आपने से suppose that ये दोनों लिखा, suppose that आपने internal, external और complete, incomplete लिखा for the sake of that, और आपने बहुत अच्छे से define किया, that means you are leaving that one point of the model answer, है ना? इसी बात के लिए तो zoology we should take that whatever the अब इसके अलावा कोई और type नहीं है. Is there any type of the metamerism? No. That means you have to have address at least all the 3 points. अगर आपने ये दोनों लिखा और आपने बहुत अच्छे से describe भी किया है, but आपने ये नहीं लिखा, तो examiner will get the chance to cut your marks. क्योंकि आपने 3 पॉइंट्स की जस्टिफाई नहीं करी जो कि उसके मॉडल आंसर में है, ठीक है? तो लिखना तीनों है, उसको elaborate आप कैसे भी अपने लेवल में कर लो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर. इसीलिए ऑल द टाइम वी आई से कि जितने भी पॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं, सपोज दैट यू हैव टू हैव मेंशन ऑल द डायमेंशंस एट लीस्ट, so that it will not be the chance to cut your marks. True and false. Yes, see to mathematics. True में लिखो. The number of segments is generally constant for each species. Means new segments are not added after maturation / embryonic development. That means suppose that if we talk about that head, thorax and abdomen, so jitne segment hai, that segment will going to form during that embryonic development only. Even if we talk about that annelida, so annelida also so many segments. Suppose that if any earthworm has 100 segments during their embryonic development, so for the full life it will remain the 100 only. It's not like कि उसमें increase or decrease हो जाएगा. Unlike the flatworms में this is increasing or decreasing. So that is the example of the pseudo. Write it down, pseudo. There are number of segments / proglottids, that's we are talking about. The number of segments / proglottid / proglottids of body is not fixed. As the segments can be removed or added.
continually the segments can be removed or added continually या continuously दोनों ही सही होता है continuously throughout the life. नेक्स्ट पॉइंट लिखो ट्रू में growth occurs within the simple elongation of pre-existing segments within the simple elongation of pre-existing segments सेकेंड में लिखो सीरो में लिखो growth occurs due to addition of new segments. Growth occurs with the addition of new segments with proliferation just behind the scolex ब्रैकेट में हेड रीजन. थर्ड पॉइंट all segments third point just behind the scolex / head region. third point हाँ उसमें था ना. थर्ड पॉइंट लिखो all the segments are of the same age. ट्रू में लिखना है ना इधर वाले में. all the segments are of the same age, same stage actually, same stage STAGE, same stage of development. तीनों में लिखो the segments may differ from one another in age and degree of development next segments are functionally true में लिखना है segments are functionally interdependent. जैसे कि if we talk about that gut system, so gut का system is actually connected with that mouth वाला head वाले region से और esophagus in that thoracic region है ना. So that is the interdependent and integrated. Segments are functionally interdependent and integrated, working in coordination way इसमें लिखो सीडो में segments / proglotids are independent. Segments / proglotids are independent and self-contained units. ठीक है. Here your basic things are finished. Significance अगर metamerism का आएगा, so we can write. I have already talked about it as we'll write the coelom का. जो coelom का significance है, almost वो इसका significance है. What is the significance of that here? That it is providing the space to develop the each specified section. It is giving that evolutionary development. It is one of that connective thing for that developmental stage. So many significances as we have written in the coelom. ठीक है. चलो next make the adding protozoa. New phylum. Start writing the protozoa. अगर कोई डाउट होगा we can discuss in the next class about that whatever we have discussed up till here. Okay. चलो write it down. Protozoa
protozoa can be defined as microscopic and acellular animals without tissues or organ level comma having one or more nuclei as a eukaryotic organism they exist either in single or colony form. They are the first eukaryotic cell behave as animals slash heterotrophic. What is what in that RH Whittaker system? What is one characteristic? What is single one characteristic which is very, very, very specific for that animal kingdom? Q. Fungi are not heterotrophic. They are. Fungi, no. Bacteria can also locomotion. Bacteria can also move, no. In that first, what was the Monera, Protista, fungi, plants, and Animalia? Every one of you know that. What is that one specific thing? Yes, very good, Manisha. So what is that one specific thing which was only and only in the animals? सबसे पहले start of that, when we have started that, we started with that two division. So two division was the first plant, second animal. So what is the basic difference on the basis of that animals and plants were classified? Cell wall, right? Rajkumar, kidhar hai dhyan? Good, very nice, Manisha. So when we have talked about that classification, please everyone see from that Monday wala class. We started only that because cell wall wala question जो है वो आपका prelims में भी पूछा जा सकता है. Exact statement was given there. But animal में तो होता ही नहीं है ना. ठीक है? So write it down. General characteristics. Make it heading. General characteristics. First write it down. देखो, suppose that if I am talking about, tell me the general thing about me. Suppose that आपसे कोई पूछा कि tell me the general thing about the geology class, है ना, या geology मैम, या जो भी कुछ बोले, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? Look बताओगे, that they are, है ना, बेसिक आप स्ट्रक्चर बताओगे. उसके पहले आप लुक बताओगे कि ठीक है वो तो छोटी सी दिखती हैं या उनका जो स्पेक्स लगाती हैं, समथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स. सो जब भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस बताएंगे. सो व्हाट इज द अपीयरिंग थिंग इन दैट प्रोटोजोआ? दे आर द स्मॉल माइक्रो. मैं ये क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द कॉपीज जो इस बार मेंस लिख रहे थे उनकी मैंने देखी है. दे स्टार्ट राइटिंग द रैंडम जनरल. भाई आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, इट्स नॉट द यूनिवर्सिटी एग्जाम की आप पॉइंट लिख दो, कहीं ना कहीं तो मार्क्स मिल जाएंगे. द यूपीएससी वांट्स दैट डू यू इवन नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज इन दैट वन वे. ठीक है, तो आपके बाद मैं ये मिस्टेक नहीं चाहती. आई डोंट वांट दिस सच काइंड ऑफ मिस्टेक इन यू ऑल ऑफ योर कॉपीज. ठीक है, जब भी आप मेंस लिखना अभी भी लिख ले जाओ. तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक का एक वे होता है लिखने का कि सबसे पहले आप उसका अपीयरेंस लिखोगे, फिर उसका हैबिटेट लिखोगे, फिर उसका स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, फिर आप बताओगे कि अच्छा वो कहाँ है, वो इस एरिया में है. राइट? सो राइट लाइक दैट. फर्स्ट राइट डाउन. दे आर द स्मॉल protozoas are small.
usually microscopic animalcules with the simplest and most primitive protoplasmic grade of organization. Protoplasmic grade of organization. Second point. यूकैरियोटिक, देखो अगर जैसे कि प्रोटोजोआ का अगर आ रहा है तो यूकैरियोटिक वाला जो टर्म है, जनरली वी आई सजेस्ट दैट, ऑफ कोर्स नॉट सजेस्ट बट दिस शुड बी लाइक दैट, आपका कंटेंट रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. सिंपल अगर क्वेश्चन है, मान लो 10 मार्क में, सिंपल क्वेश्चन इज दैट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, तो यूकैरियोटिक वाला जो टर्म है या स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक वाला टर्म है, इफ यू आर राइटिंग इनटू दैट इंट्रोडक्शन पार्ट, डू नॉट रिपीट इन एन कंटेंट पार्ट. सिंपल आप इसको यहाँ से कर सकते हो, दैट यूनिसेलुलर. यूकैरियोटिक स्मॉल, मतलब जनरल है ना, किसी के बारे में जो आप बता रहे हो वो भी एक जनरल है, तो राइट दैट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. और स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक में स्टार्ट एट दैट हैबिटेट. डिपेंड की क्वेश्चन का कोड डिमांड क्या है. मैडम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बॉडी, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बॉडी containing one or more nuclei, which are monomorphic or dimorphic, Next, diversity of habitat. Next, diversity, lives in a diverse habitat. छूट गया कुछ आयशा? बोलना है, राइट? बताओ क्या छूटना. कोई ना, मैं नहीं बोलूंगी, कोई स्टूडेंट से बुलवाऊंगी. बोलना है, ठीक है? क्या छूट गया बताओ, मुझे रिपीट कर दो. फर्स्ट पॉइंट छूट गया, हर वाला पॉइंट रिपीट कर दो मुझे. नहीं, इसके पहले आई थिंक डाइवर्स हैबिटेट है ना. दे कैन लिव लाइक एट अ वेरियस डिफरेंट लोकेशन. डाइवर्स हैबिटेट है ना, कॉमा इन सॉलिटरी, इसी में इन सॉलिटरी और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज ब्रैकेट में लिखो, कॉलोनीज की साथ ब्रैकेट में. लिविंग इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि कॉलोनीज में है तो सब दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लिविंग इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट, body is naked or covered, with the pellicle often provided the simple exoskeleton. Next, physiological division of labor. Found पूछा, what is unicellular organism? Define it. अच्छे से डिफाइन करो. इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही मान लो पूछा जाए, व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हाउ वुड यू डिफाइन इट? सिंगल सेल तो बहुत सिंपल हो जाएगा. और सिंगल सेल तो आप उसका वो बता रहे हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो, है ना. फिजिकल प्रॉपर्टी, यूनि मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल. ये तो आपने अपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई. डिफाइन करो व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. राजकुमार,
those unicellular, those single-celled organisms in which all the vital functions of the body performed within the single cell of that body. Then that's why और elaborate करना है. वैसे तो we have said that vital function. तो आप इसको बोल सकते हैं such as excretion, respiration, every single thing. That's how you are connected with the biology. Single cell तो फिर physical हो गया ना. देखो जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं सीडोसिलोमेट, सॉरी जब हम लोग बोलते हैं सिलोम और असिलोमेट, असिलोम जनरली हम लोग ए वर्ड लगाते हैं अपसेंस के लिए, बट बिकॉज दे वर कंसिस्टिंग इन दैट प्रोटिस्टा, सो द सेलुलर इज इटसेल्फ इज नॉट डेवलप्ड दैट मच कि ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाए. जैसे कि अगर सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट दैट ह्यूमन सेल है ना, तो फिर टॉकिंग दैट सपोज दैट न्यूरॉन इज अ सेल, नर्व सिस्टम इज सेल या स्किन सेल, सो हम इसको असेलुलर नहीं बोल सकते. Because if we talking about that skin cells, coelom में जब हम लोग when we are using the word acelomate, that means we do not have containing any kind of specific characteristic of coelom, right? So when we are talking about that acellular, what is the difference between that acellular, when we are saying that protozoa, but for that single skin cell we are saying it cellular. That means single cell has a specific function. जैसे कि if coelom has a specific function, है ना, that function is not present in that acelom. है ना. असेलुलर का मतलब है द प्रोटोजोआ बॉडी वाज असेलुलर. जनरली वी डू नॉट यूज द यूनिसेलुलर बिकॉज दिस सेल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल टू परफॉर्म. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन सेल का अलग फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का अलग फंक्शन है ना, वैसा कुछ फंक्शन प्रोटोजोआ का नहीं है. द कंप्लीट थिंग इज अकरिंग इन दैट बॉडी, दैट्स फॉर असेलुलर. ठीक है, क्या लिख रहे थे? फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या लिखा आगे? Found in the single cell body, performing all the essential or vital functions for the essential and vital function of life. तो कितने पॉइंट्स हमने लिखे यहां तक? काउंटेड 5 पॉइंट लिखे. देखो 5 पॉइंट में बिना किसी विदाउट एनी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में 5 पॉइंट लिख लिए, है ना. अब ऐसे आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ 5 पॉइंट लिख लिए. एक आपने नॉर्मल लिखा, फिर आपने हैबिटेट लिखा, फिर आपने उसका फॉर्म लिखा कि किस फॉर्म में दे आर लिविंग दैट, फिर आपने क्या लिखा, ओके दिस द काइंड ऑफ बॉडी व्हिच इज शोइंग दैट फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ कम इनटू दैट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, है ना. हाँ, अभी 4 पॉइंट इसमें हो जाएंगे. दैट्स हाउ यू राइट. तभी यूपीएससी जब आपको एग्जाम दे रहा है, जब क्वेश्चन दे रहा है, वो इस एफिशिएंसी के साथ दे रहा है, देन इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सिंपली राइट अबाउट द 150 वर्ड. अदरवाइज इन दैट फिजिकल सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक में यू विल राइट द जनरल पॉइंट्स, और कभी भी आपने 150 वर्ड टच नहीं कर पाओगे अच्छे से वर्ड्स, है ना. नेक्स्ट डाउन लोकोमोशन. लोकोमोशन mainly occur in the cellular form of pseudopodia. In a cellular form of pseudopodia, bracket में लिख लेना finger like. In the cellular form of pseudopodia, comma, whip like flagella. Whiplash movement is the movement of flagella, right? Whip like flagella and hair like cilia. And hair like cilia, नहीं continue है. Whip like flagella and hair like cilia present as the locomotory organelle, as a locomotory organelle, and even it is absent in some protozoans, such as parasitic form, example Pooja, parasitic protozoa. Yes, they are moving with that body movement, है ना. Okay, next, write it down.
या तो इसमें होती है तो किसकी होती है, जैसे कि यूग्लिना हैव द, यस यूग्लिना हैज द फ्लैजिला, मोनोसिस्टिस है ना, पैरामीशियम हैज द सीलिया, या तो होगी तो अमीबा, दिस इज योर स्यूडोपोडिया, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, या तो फिर कंप्लीटली एब्सेंट। डायग्राम पे कमेंट नहीं करना है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन is of different type, is of various type, nutrition is of various type, such as holozoic, देखो इसमें न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में अलग से है, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ आर द स्पेसिफिक रिटन इन योर सिलेबस, और क्वेश्चन भी आए हुए हैं ऑफ कोर्स। सो होलोजोइक, अगर इस वर्ड को अगर सपोज दैट आपने नहीं भी लिखा, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू राइट, बट इफ वी आर नॉट राइटिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलो? मींस complete, zoic means animal, है ना, that's what we are going to do in that when we are talking about that nutrition in protozoa. Holozoic, comma, holophytic, parasitic, etc. Next, respiration and excretion, because this is a unicellular, so we have to write the respiration and excretion in the single point. अगर अलग होता, जैसे कि as we go in that coelentrates, हम वहां पे क्या लिख देंगे, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिकली, और वो उसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी, है ना। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल सरफेस, देखो मैं इसलिए इतना इलाबोरेट करके लिख रही हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दैट सो मच इलाबोरेशन, बिकॉज इन द फर्दर फाइलम you guys have to write by yourself, ठीक है, उस समय मैं पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, ठीक है, बस बताऊंगी, बट ठीक है, write by yourself only. Respiration and excretion through general surface, or through contractile vacuoles, serve as osmoregulation process. तो न्यूट्रिशन हो गया, मतलब डाइजेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अब क्या बचा, रिप्रोडक्शन, है ना, राइट डाउन, रिप्रोडक्शन occur by both asexual, reproduction occurs by both asexual, ब्रैकेट में लिखो, बाइनरी फिजन, बडिंग, etc. and sexual, ब्रैकेट क्लोज, and sexual, ब्रैकेट में लिखो, conjugation, syngamy, पैरामीशियम में आपका ये लिखेंगे हम लोग, सिनगेमी, ऑटोगेमी, साइटोगेमी, कॉन्जुगेशन एंड ऑल एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। एक पॉइंट लिख लो, इंसिस्टमेंट, commonly occurs to help in their dispersal, even during the unfavorable condition, of survival, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट मेक द हेडिंग लोकोमोशन, इन प्रोटोजोआ, इसको हेडिंग डालो, ये क्वेश्चन आप में आया हुआ है, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन दोनों अपने क्वेश्चन है, ठीक है।
Write it down. So suppose that now tell me if the question will be coming, you suppose that 10 marker locomotion in protozoa. ठीक है, क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? What will write in the introduction portion? ऑनलाइन स्टूडेंट यू गाइस प्लीज रिप्लाई नाउ. ऐसे तो फिर सिर्फ ऑफलाइन के लिए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स. सपोज दैट सिंपल क्वेश्चन योर 10 marker is a, do not tell me what you write in the body, just simple tell me locomotion in protozoa, that is your written as a keyword in your question, an example, and then this is your 10 marker. 10 marker is your 150 words. ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करोगे ना, स्टार्ट में तो लिखने नहीं रहोगे. दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, दिस इज योर बॉडी पार्ट, एंड दिस इज कंक्लूजन पार्ट. Yes, Pooja, you tell me. Okay. Rajkumar. रेस करना है वॉइस, मेरी चिल्ला चिल्ला के खराब हो जा रही है. रेस करो वॉइस. राजकुमार पहले बता चुकी हूँ आपको. What you'll write in the introduction? Manisha, Rohit, Surbhi, anyone? What will you write in the introduction? देखो स्टार्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ. ग्रेजुअली यू गाइस विल टेल मी. ओके, सो व्हाट वी कैन सी इन द क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ड इज लोकोमोशन, द सेकंड वर्ड इज गेट द ब्राउनी पॉइंट्स. गाइस उस 700, अगर मैं सपोज दैट आप लोगों की रैंकिंग की बात करूं तो अंटिल यू आर नॉट गेटिंग दैट 730 प्लस मार्क्स इन द इंटरव्यू यू विल नॉट हैव द रैंकिंग. ऐसा तो नहीं सोच रहे कैटेगरी वैटेगरी तो नहीं लगानी है ना. अच्छी रैंक के लिए irrespective of the whatever the thing, whatever coming you are have the category or not, आप अगर 730 750, चलो इसको हटाते हैं, specifically we are talking about that optional. सबने कम से कम 310 तो प्लस टारगेट करके रखा है ना मिनिमम. एवरीवन हैज अ टारगेट और आते भी है, इट्स नॉट समथिंग अ बिग डील. ठीक है, 310 अगर प्लस आप ऑप्ट कर रहे हो, so that means in one paper you have to get the 155 marks out of 250. ठीक है, कैसे मिलेंगे? अगर आप लोग एवरेज मार्किंग लाओगे 3 आउट ऑफ 10 तो फिर तो मिलना बहुत मुश्किल है ना. तो हाउ विल यू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स और द गुड पॉइंट्स? बाय राइटिंग द वेरी गुड इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन. सो अंडरस्टैंड द डिमांड फर्स्ट इन द क्वेश्चन. ओके, दैट्स आप ऐसे नहीं मिलते हैं अच्छे मार्क्स. तो इसमें डिमांड एक आपका कोड डिमांड है लोकोमोशन, सेकंड डिमांड है आपका प्रोटोजोआ. फर्स्ट डिफाइन द लोकोमोशन वेरी स्पेसिफिकली. लोकोमोशन क्या है? ठीक है, उसको सिर्फ आपको बहुत शॉर्ट और प्रिसाइसली डिफाइन करना है. द लोकोमोशन इज चेंज इन द कंप्लीट बॉडी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन. लोकोमोशन इज लोकेशन इन मूवमेंट. ठीक है, डिफाइन द लोकोमोशन वेरी प्रिसाइसली एंड कनेक्ट इट विथ द प्रोटोजोआ. अगर आप इसमें भी प्रोटोजोआ के बारे में लिखोगे सो फिर तो आप न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में भी प्रोटोजोआ के बारे में लिखोगे. हाउ इट इज मेकिंग डिफरेंस? स्टार्टिंग में लोकोमोशन कनेक्ट, फिर आप देख लो कि प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर बॉडी इन दैट सच काइंड ऑफ एडवर्ब. बस 3 से 4 लाइन में इतना आ जाएगा. 1.5 लाइन में आप लोकोमोशन लिखो या 1 लाइन में लोकोमोशन डिफाइन करो, 2 लाइन में आप प्रोटोजोआ डिफाइन करो. समझ आ रहा? ऐसे कनेक्ट करते हैं डिमांड को. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेल. ऐसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट टू राइट इन द गुड इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलो राइट ऑन मेथड्स ऑफ लोकोमोशन. हाँ, ये लिखा है ना, क्या लिखा है? ठीक है, राइट इट डाउन. लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ. Basically there are 4 known methods. There are 4 known methods of locomotion in protozoa. डैश करके लिखो ऐसे, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. फर्स्ट अमीबॉइड, second flagellar, flagellar movement, sorry, amoeboid movement, flagellar movement. Third ciliary movement, fourth metabolic movement, make the heading amoeboid movement.
अब लिखने के बाद भी बहुत क्रक्स इन्फॉर्मेशन क्या, व्हाट शुड बी द इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर कॉपी। पहली बात, किसमें होती है, किस टाइप की होती है और कैसे होती है, सिर्फ यही 3 चीजें एडजस्ट करनी है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, दैट्स इट। व्हाई दिस एनिमल इज मूविंग विद द अमीबॉइड मूवमेंट, है ना, व्हिच, कौन सा एंड कैसे हो रही है, राइट डाउन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा ये वर्ड अगर नहीं समझ आ रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज अभी हमने क्लासिफिकेशन नहीं करा है ना। एज वी गो टू डू, जब भी हम लोग फर्दर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें ये वर्ड समझ आ जाएंगे। बेसिकली इसमें भी 4 क्लासिफिकेशन, मैस्टिकोफोरा, सिलेटा, पैराजोआ, सॉरी स्पोरोजोआ एंड फ्लैजेलेटा, 4 ही है, उसी में हम लोग एनिमल्स उसके नाम है। फाउंड इन ऑल सार्कोडाइन्स, इन ऑल sarcodines, underline that, sarcodine. Sarcodine is actually a group of protozoa, a kind of animal in the protozoa, comma. Some mastigophora and sporozoa, some mastigophora and sporozoa. स्पोरोजोआ आपका एक प्रोटोजोआ का ऐसा क्लास होता है जिसमें सारे ही, आप पता है क्या रखते हो, हाँ ये भी, और स्पोर किसमें फॉर्मेशन होगा, इसमें सारे पैरासिटिक फॉर्म्स आते हैं, जितने भी आपके पैरासिटिक फॉर्म है जनरली आपके स्पोरोजोआ में ही रखे जाते हैं, ठीक है। सीलिएटा में आपके सारे सीलिया वाले आते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्पोरोजोआ, it consists in the formation of pseudopodia, by the streaming flow of cytoplasm, in the specific directional movement, next line, in the specific directional movement this type of locomotion occur only over the surface चेंज करो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, in this there's an active contraction of, ectoplasmic tube slash plasma gel प्लाज्मा जेल। इसी को एक्चुअली अमीबॉइड मूवमेंट को ही हम लोग विस्कस थ्योरी या प्लाज्मा सॉल्ट थ्योरी से भी हम लोग विल डिफाइन इट, प्लाज्मा जेल स्लैश प्लाज्मा जेल at the posterior end of the body, इसी में लिखना, स्टैंडर्ड चेंज नहीं करना है, at the posterior end of the body, this leads to endoplasm slash plasma sol to flow forward into the expanded pseudopodium, full stop. This process involves continuous solation
continuous solution, SOLATION, solution. At the posterior end, underline that solution. At the posterior end, and gelation at the anterior end. At the anterior end, creating forward pushing, creating forward pushing force, creating forward pushing force. In which direction, force के बाद कॉमा लगा लो. In which direction the animal is moving, due to different forces at anterior or and posterior end. At anterior or posterior end. Stanza change. This is called Sol-Gel theory. This is called Sol-Gel theory or change of viscosity theory, which was given by, underline that, Sol-Gel theory. अभी तो नहीं, आपके IFS में this was a question. Simple the question about the Sol-Gel theory of the amoeba. ठीक है, तो underline that Sol-Gel theory given by Mast and Pantin. Given by Mast and Pantin in 1925. In 1925, which was full stop. It was further supported by Goldacre, and Rosalinski, scientist. Rosalinski. Full stop. देखो, this is the first theory of the locomotion. So everyone in their childhood must be played with that balloon. छोटा छोटा जो balloon होता है, ठीक है? So देखो, पहली बात तो first we understand the body. यही बचपन से अमीबा देखा है. Actually अमीबा का कोई shape नहीं होता, ठीक है? For the sake of that. So that is your called ectoplasm. Actually this is your pellicle. This is the outer wall which is creating the shape of the body, है ना, in whatever form it is. So this is a pellicle, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका होता है, यहाँ से शुरू होता है. What is the starting in here? थोड़ा सा space होता है between that outer wall and that inner endoplasm. So this is called ectoplasm. This is called ectoplasm and this is called the endoplasm. सारा जो गेम है आपका वो इधर ही हो रहा है, ठीक है? अच्छा, आप अपनी तरफ से बताओ, ectoplasm will create more force or endoplasm will create more force? Ectoplasm is nothing. Here there's a nucleus. Of course, this is a eukaryotic cell, so there will be the nucleus. There will be the gas vacuoles, है ना? So many things there. There's a small food vacuoles. There's a pharynx also. So many things there are. Although this is a unicellular. So that means endoplasm is much more denser. है ना? Ectoplasm is just the space between that pellicle or the outer wall and the endoplasm. Whatever the cytoplasm is filmed inside that cell. Okay. So what is happening? इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन और जेल थ्योरी. सपोज दैट यहाँ पे आपका फूड पार्टिकल है ना. सपोज दैट अमीबा कैन सी दैट देयर इज अ फूड पार्टिकल, बट अमीबा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दैट मूवमेंट्री और द फ्लैजेला और द सेल्युलरी ऑर्गन. तो जो भी होना होगा which will happen in that cell body only. So what is happening? जब बलून, हमने जब छोटा सा बलून देखा है, so suppose that ये आपका बलून है. This is here what is happening? The air is distributed equally in the whole balloon, है ना. If you will push, if you will just create pressure here, if you just squeeze at its one end, so what is happening? आपने बलून को लिया है,
you have just squeeze it one end, so इसका जो proper form है वो up हो जाता है, थोड़ा सा length उसकी increase हो जाती है. So same theory is occurring here. So what is happening, यहाँ का जो endoplasm है, it is squeezing. तो हमने क्या लिखा, active contraction of the endoplasm at their posterior end. Suppose that, how will you decide the posterior anterior end? This is not the something mouth or something like that, because where the food is, where the amoeba wants to move, that's it. Amoeba, why the amoeba wants to move, basic thing is your food. Okay, suppose that amoeba wants to move this side, so what will happen, this will consider your anterior side and this will consider your posterior side. So the complete endoplasm will squeeze like this, है ना, will squeeze like that. So then it will be formed like this again. So what is happening here, when this is squeezing, suppose that, है ना, this is a squeezing like that. So there is not in the changing in the amount of endoplasm or ectoplasm. So यहाँ का जो spread endoplasm था, that will push forward, है ना, जैसे कि balloon में air है, so if you are squeezing at one end, so all of that material is coming forward, so it is creating that pressure difference. So suppose that एक ये balloon है जिसमें full air है और एक ये balloon है जिसमें थोड़ी सी air है, so which one is having the more pressure, this will, है ना. So when it is squeezing and everything, whatever the cytoplasm inside that, which is going forward and in that direction, it is called. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो material है उस, अच्छा solve मतलब normal solution. So I suppose that आपने what you have done that, you have the glass of water, you are simply dissolve the some amount of sugar, that is your salt. Normal water नहीं ले सकते क्योंकि थोड़ा तो solution है. And then the one thing where in the second water bottle you have squeezed, you have mixed up the gel. It is a gel is more thicker than the salt, ऐसे consider कर लो. तो यहाँ का posterior end का क्या होता है, solution, और anterior end का क्या होता है, solution. समझ आ गया? So in which direction it will move? अब amoeba का तो कोई shape है नहीं, balloon का तो फिर भी there will be the rounded shape, so it will just expand forward to grab that kind of movement. Simple. समझ आ गया? Yes, that is also the viscosity concept, है ना. सारा material अब यहाँ पे it is not the dead. तो यहाँ पे suppose that if you want to make the diagram of like this, so if you after that squeezing, है ना, after the squeezing of this वाला portion, suppose that ये portion is squeezed हो गया. What is the significance of the ectoplasm here? So all of the endoplasm will concept, because endoplasm is more thicker or the more viscous. So this squeezing part is actually filled with the ectoplasm, which is not at all thicker. The major thicker, ऐसा खत्म तो नहीं ना, it's not ended, है ना, जो आपने squeeze करा है वो that portion will you held it. So यहाँ पे आपका ectoplasm है. Even the ectoplasm also creating the kind of push to the endoplasm to move forward. Got it? Any doubt, anyone? This is the concept of that plasma gel theory. ठीक है, ये डायग्राम बना लो, अपने मन से डायग्राम बना लो. Yes, exactly, slime की तरह, जिधर भी उसका मूवमेंट आगे जा रहा है, slime will become a little pushing forward. ये वाला डायग्राम बना लो. क्या दिखाना है, एक्टोप्लाज्म दिखाना है, एंडोप्लाज्म दिखाना है, मूवमेंट दिखाना है. यहाँ पे क्या लिख दिखाओगे आप, द स्क्वीजिंग ऑफ द एंडोप्लाज्म. ठीक है, खुद से डायग्राम बनाना इजी है ना. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, प्लीज मेक इट बाय योरसेल्फ. अच्छा तो एंटीरियर पोस्टीरियर दिखा देना प्लीज. That's why this is kind of pseudopodia forms, है ना. जब आप मटेरियल यहाँ पे स्क्वीज करते हो तो वो क्रिएट करता है डिफरेंस. मेक सच एरोज ऑल्सो. ये वाला एंड ना ट्राई टू मेक अ लिटिल, जब आप बना रहे हो, अगर दो डायग्राम बना रहे हो, इफ यू वांट टू शो द मूवमेंट, ये वाला एंड थोड़ा सा नैरो दिखाना. ठीक है, क्योंकि स्क्वीज हो रहा है, थोड़ा सा नैरो. दोनों साइड में स्यूडोपोडिया नहीं बनाएंगे ना. पूछा किधर है पोस्टीरियर आपका, ये है पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर इस साइड होगा ना. ये पोस्टीरियर बनाओ, अगर बनाओ, ये एंटीरियर बनाओ तो बनाओ.
अगर आप पोस्टीरियर बनाए तो बस ये वाला एंड कट कर दो, ये वाली लाइन हटा दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो आपका देखो जिधर स्क्वीज करोगे उधर सीडोपोडिया थोड़ी दिखाओगे, सीडोपोडिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे ना, दैट्स एक्सपेंडिंग, देखो एरो का निशान है ना, तो फिर ये कट करके इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और ये यहाँ पे लिखो पोस्टीरियर, यहाँ पे लिखो एंटीरियर। जब डायग्राम वैसे बनाना तो उसको थोड़ा सा और लेन देन अप कर देना, है ना, सो दैट यू आर शोइंग दैट स्क्वीजिंग अप। वेरी गुड, 3 डायग्राम बना लिया आपने, फाइनल वन कौन सा है? फिर थोड़ा सा दिखाओ, अच्छा इसमें ना ये थोड़ा सा ये नॉर्मल है, अच्छा इधर मूव कर रहा है, हाँ तो राजकुमार जब इधर मूव कर रहा है तो इधर सीडोपोडिया क्यों फॉर्म कर रहे हो आप? ये वाला कट करो, जिधर मूव कर रहा है देखो ना, लाइनिंग देखो, उधर सीडोपोडिया फॉर्म है ना, तो ये सीडोपोडिया नहीं होना चाहिए ना, इधर तो आपने स्क्वीज किया है या कंट्रैक्ट किया है। एग्जाम्पल अमीबा, एवरीवन मेड द डायग्राम, देखो ऐसे शो करना है डायग्राम को, जिधर ये मूव कर रहा है, इफ यू वांट टू मेक द वन डायग्राम सिंपल मेक दिस, है ना, ऐसे करके, तो यहां से क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज योर शोइंग द एक्सटेंशन, दैट्स इट, दैट्स योर सिंपलेस्ट डायग्राम, ठीक है। इसको वही दिखा दो, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, स्क्वीजिंग ऑफ द दिस थिंग एंड प्लाज्मा सॉल्ट कन्वर्टिंग इनटू द प्लाज्मा जेल। बहुत सारा मटेरियल जब बहुत थिक हो जाएगा तो उसको जेल बोल देंगे, दैट इज अ सॉल्यूशन एंड जेलेशन थ्योरी, ठीक है। कट कर दिया आपने, यू हैव दिस व्हाइटनर, चलो नेक्स्ट स्टडी राउंड, एग्जांपल में लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्टडी राउंड, फ्लैजुलर मूवमेंट, the second type movement is your flagellar movement. It is a characteristics of mastigophora, underline that, उसका वो किसका था characteristics था, sarcodines का, it is a characteristics of mastigophora which bear one or more flagella, full stop. Flagella is a thread-like structure, देखो आपके यहाँ पे यहीं पे some of the things we going to talk about the structure of the flagella and the cilia and the microtubule when we talk about the cytology, because वहाँ पे when we talk about, then we talk about the renin, so many things which is making a different kind of proteins which are making the flagella and the cilia. यहाँ पे हम flagella और cilia का structure नहीं करेंगे, 9+2 अरेंजमेंट हमने करा है ना शायद, 9+2 अरेंजमेंट एंड ऑल वो वहां पे करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम वी गेट टू नो द अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगी वो रटिफिकेशन होगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। जनरली इट इज फाउंड इन 1, 2 और मैक्सिमम 4 इन नंबर, full stop. This kind of movement require liquid medium for locomotion. Mainly 3 types of flagellar movement have been recognized. इसके आगे we'll do in the, okay, thank you everyone. There will be any doubt, you guys can ask me in the next class also, I'll explain it, okay, thank you.